Hello everyone, welcome to Cover Drive. Let's dissect cricket and India's loss. So, unfortunately, India lost the test match. Uh, at times it's good to be vindicated, but not at the expense of India's win. वैसे ही आज India lost the test match after being in a dominating position. In fact, they were leading the test match throughout most of the majority of the time they were leading, but then at the end, who wins? जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर. So as they say. Right? Moving ahead, let's dissect what went wrong with India. क्या हमने गलत किया और क्या सही किया, इंग्लैंड ने क्या सही किया. खैर उनकी तो एक ही अप्रोच है यार, आओ मारो, अग्रेसिव क्रिकेट. एंड आई थिंक मैं और संदीप अभी बात कर रहे थे, इंडियन कंडीशंस में वो वर्क करता है. कोई माने या नहीं माने, आप जो भी बोलो, बैसबॉल बोलो या उसको अग्रेसिव क्रिकेट बोलो, सिंपली कुछ भी बोलो, लेकिन दैट अप्रोच वर्क्स इन इंडिया. आपको वही उतना ही टाइम खेलना है, आपको 80-90 ओवर्स आप खेलेंगे. आप वो 80-90 ओवर्स में 175 बनाओगे या आप उन 80-90 ओवर्स में 300 बनाओगे. दैट मेक्स द डिफरेंस. और इंग्लैंड अगर यही अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच इंग्लैंड फॉलो करता, तो वो लोग जो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 200 ऑड बनाया, वो 150 बनाते. सेकेंड इनिंग में वो 440 नहीं बनता, 300 बनता. तो वो 100-200 का जो मार्जिन है ना, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. तो आई थिंक नाउ इंडिया इज अंडर द पंप because England won't change their approach. Now the problem is इंडिया को एक चीज से बचना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम कोई ऑपोजिशन पे स्ट्रैटेजी लेके आती है ना, और हम उस स्ट्रैटेजी से हार जाते हैं या वो हमको हैम्पर करती है, तो हम ना उस अपनी अपनी आप अपनी गेम को डायसेक्ट करने की बजाय हम उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने लग जाते हैं. यार उसने कैसे किया, उसको कैसे काउंटर करे. नो, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप. ऐसा ना हो जाए कि हम ये सोच रहे यार ये स्वीप कर रहे हैं, इसको कैसे काउंटर करें. वो तो करेंगे. आप आप ये ना सोचे कि यार ये हम अब इसको कैसे काउंटर करेंगे. अब पहले वी हैव टू लुक विद इन, because I think our team selection is completely wrong. And when I say completely wrong, I mean it. बहुत सारी हमारी टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, और उन टीम सिलेक्शन की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए संदीप के पास चलते हैं. संदीप, टेल अस what went wrong with the team selection. So England's win today definitely puts India on backward. So coming to the selection, I think the sides that are touring India earlier, right? Good old days, they used to play two seam bowlers and maybe two or three spinners. But now England have learned the lesson. So imagine an English team touring India, they're playing only one fast bowler, Mark Wood. That's it. Rest all are spinners, they're bowlers. And India could not opt for that. And having quite a few quality spinners in our country, and of course we have Kuldeep Yadav in the ranks. I think to me the selection went wrong where we played Mohammad Siraj instead of Kuldeep Yadav. We could have been a bit more brave. We could have been a bit more decisive. I'm sure Kuldeep Yadav's inclusion in the team in the 11 instead of Mohammad Siraj could have yielded perhaps better results, because Akshar Patel is a good batsman. I'm not taking any credit away, but unless the wicket favors him, he cannot become a deadly bowler. Then that's what has happened in this test match. Even Ravindra Jadeja looked quite ordinary in this test match. So Kuldeep Yadav's ability to bring the ball in and move the ball away, he's a Chinaman bowler, and he could have extracted a bit more bounce as well, given his action, and then he has got a good jump. And then tail-enders he could have just rattled the tail-enders last 3-4 wickets. So imagine in the first innings, right? England were 155 for 7, and they went on to score 246. It's not, see, those 90 odd runs, they were not, they became quite decisive in the end. So I think India's approach should have been a bit more unconventional. The coach and the captain should think with an open mind, because
Siraj did not bowl much. He did not pick a lot of wickets in this test match. If the wicket is going to stay same, even at Vizag, I think India should drop Mohammad Siraj and then play Kuldeep Yadav and attack them. Because if at all they're going to play sweep shots, as you rightly pointed out, just try and understand where we are going wrong instead of focusing more on the opposition's tactics or opposition's strategy. Then, in that case, right, if at all you got to change your 11 or change your selection, then this could be the best bet with the kind of squad that you have. Kuldeep Yadav could be highly decisive, and he can become a game changer if you include him in the 11. That's my view. What do you think? I think you're right. आप कन्वेंशन को ना भाड़ में जाने दें और आप 4 स्पिनर्स खिलाएं, सिंपल। एज यू राइटली सेड, पहले क्या होता था कि जो टूरिंग टीम्स होती थी वो कन्वेंशन के साथ जाती थी, 2 मीडियम पेसर। आई यूज्ड टू थिंक, अरे यार 2 मीडियम पेसर ये क्यों खिला रहे हैं? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं होता ना, आपका माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है। आप ना एक अपने आप ही अपने उसमें फंसे हुए होते हो, कन्वेंशन के साथ जाना है, नहीं नहीं दो खिलाना है। अरे क्यों खिलाना है भाई? सेफ्टी ऑफ हैविंग अ मीडियम पेसर। अरे भाई, मीडियम पेसर ने 10-20 ओवर डालने हैं टेस्ट मैच में, आप एडिशनल स्पिनर खिलाओ। वो नहीं खिलाते थे, अब उन्होंने चेंज कर लिया, दे आर बीइंग ब्रेव। हम लेकिन कन्वेंशन में फंस गए हैं। आपको व्हेन यू हैव अ बॉलर लाइक जसप्रीत जसप्रीत बुमराह, हुज योर गो टू बॉलर, माइंड यू, आप सिराज के लिए नहीं जाओगे अगर आपको विकेट निकालना है, पार्टनरशिप ब्रेकर के तौर पे आप बुमराह को देखोगे, जो कि बुमराह ने किया भी है इस टेस्ट मैच में, इंपॉर्टेंट जंक्चर पे विकेट निकाल के दिए। आप बुमराह को खिलाओ मेन आपके पेसर के तौर पे, आप कुलदीप यादव को खिलाओ, सिंपल, नो ब्रेनर, बी ब्रेव। बिल्कुल सही है। और एक बात और जो अभी संदीप ने कहा कि एक और एलिमेंट है जो आपको कुलदीप यादव जहां पे हेल्प करेंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल वर नॉट इफेक्टिव ऑन दिस ट्रैक। पता है क्यों? क्योंकि जडेजा तो, अक्षर पटेल के बारे में तो फिर ठीक है, चलो वो इतने एक्यूरेट नहीं है, बट जडेजा हम जानते हैं बहुत एक्यूरेट है। उन्होंने वैसी बॉलिंग की जो करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जडेजा और अक्षर पटेल जैसे बॉलर जो होते हैं ना, वो बहुत एक्यूरेट है, लेकिन वो डार्ट खींच खींच के डालते हैं, खींच खींच के मतलब खींच के, ज्यादा फ्लाइट नहीं करते बॉल को, वो वहीं पे पिच कराते रहते हैं। वो क्योंकि वो ज्यादा फ्लाइट नहीं करते तो उनकी बॉल बाउंस नहीं होती। आप जितनी ऊपर से बॉल डालेंगे उतना ही ज्यादा आप उसको बाउंस करने के लिए एक तरह से इजाजत दे रहे हैं, या उसको अलाउ कर रहे हैं कि बाउंस करे। ऊपर से आएगी तो ज्यादा बाउंस करेगी, लॉ ऑफ फिजिक्स। अब ये लोग कैसे बॉलर है, खींच खींच के डालते हैं, सीधा 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 सीधा। और नेचुरल वेरिएशन पे, नेचुरल वेरिएशन क्या होता है, एक बॉल सीधी गई, एक बॉल टर्न होगी, बॉलर को भी नहीं पता तो बैट्समैन को कैसे पता होगा, तो एलबीडब्ल्यू मिल जाते हैं उनको। अब यहाँ पे क्या है, वो स्वीप खेलते हैं। अब उनको ना स्वीप करना ऐसे बॉलर को बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जहां पे बॉल ज्यादा बाउंस नहीं करता स्पिनर का, वहां पे आप स्वीप कॉन्स्टेंटली खेल सकते हो, उसका पेस भी यूज कर सकते हो। आप स्पिनर, आप अश्विन को नहीं खेल सकते उतनी आसानी से, क्योंकि अश्विन बॉल को फ्लाइट कराते हैं। आप अगर स्वीप खेलने जाओगे, बॉल ज्यादा बाउंस देगा तो आपका ग्लव ले जाएगा और हवा में जाके आप कैच हो जाओगे स्लिप पे या विकेट कीपर पे। लेकिन अक्षर पटेल और जडेजा को स्वीप मारना आसान है, क्योंकि वो सेम जगह डालते रहते हैं। अब ऑफ स्टंप के बाहर अपना पैर लगाओगे, एलबीडब्ल्यू भी नहीं होगा, स्वीप मारोगे, उनका पेस यूज करोगे और बॉल भी बाउंस नहीं होगा। अब यहाँ पे कुलदीप यादव आपके लिए हेल्प करते। कुलदीप यादव इज अगेन अश्विन लाइक बॉलर। वो अब तो जब से वो अपना चेंज करके आए हैं सब एक्शन और उनका लाइन लेंथ जो उन्होंने चेंज किया, ट्रेजेक्टरी, अब तो बॉल को पूरा आराम से डालते हैं। आराम से डालेंगे मतलब फ्लाइट डालते हैं, वो फ्लाइट कराते हैं, तो उनका बॉल भी बाउंस करेगा। तो इट वोंट बी इजी टू स्वीप हिम। प्लस वो बैम्बूजल कर देंगे आपके टेल एंडर्स को, एक गुगली मारेंगे एक नहीं मारेंगे, उनको समझ में नहीं आना। और जब गुगली मारेंगे तो फिर ऑब्वियसली अगेंस्ट द स्पिन और विद द स्पिन वाली बात हो जाती है। तो इट्स यू आर मच बेटर ऑफ प्लेइंग कुलदीप यादव। अरे भाई, आपके पास इतना आउटस्टैंडिंग बॉलर है, वो तो अब तो बहुत ही अच्छा हो गया, उसको खिलाओ ना यार। कहाँ Yeah. कहाँ उसको बिठा रखे हो अपने वेटिंग इन द विंग्स? यूज करो यार, कन्वेंशन को मारो गोली। तो राहुल द्रविड़ नीड्स टू बी ब्रेव इन दिस, क्योंकि ये जनरली कोच और टेक्निकल स्टाफ का काम होता है ये सब चीजों को निकाल के रखने का। ये कैप्टन को ना डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है इस तरह का एनालिसिस। तो यू नीड टू बी ब्रेव। तो अगर आप, और दूसरी बात, अनदर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू बी ब्रेव विद आवर बैटिंग एज वेल। ब्रेव इन द सेंस फर्स्ट टीम सिलेक्शन। यार आप श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल को खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो। वो पाटा विकेट पे, कभी कोई पाटा विकेट मिलती है, गरीब टीम मिलती है, उसको मार मूर के रन बना देते हैं, सेम कहानी है। जहां बॉल टर्निंग ट्रैक पे कब रन बनाए इन्होंने? मैंने तो कभी देखा नहीं शुभमन गिल को कोई बहुत ही डिफिकल्ट विकेट पे रन बनाते हुए, मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग। ना मैंने उनको लिमिटेड ओवर्स में देखा,
ना मैंने उनको टेस्ट क्रिकेट में देखा। मैंने उनको हमेशा वो 350 में बहती गंगा में हाथ धोते देखा है, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों को। मैंने कभी नहीं देखा कि डिफिकल्ट विकेट पे उन्होंने, इंडिया 250 पे ऑल आउट हो गई और शुभमन गिल ने 100 बनाया और ये 75 80 बनाया। मैंने तो नहीं देखा। मे बी आई एम मिसिंग समथिंग। ना मैंने श्रेयस अय्यर को देखा। वो भले ही मानते हो कि भाई मैं तो दुनिया का बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं तो पुल भी अच्छा खेलता हूँ, मैं तो मेरी तो कुछ वीकनेस ही नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ना तो वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट उतने अच्छे हैं, और ना ही वो स्पिनिंग बॉल के अगेंस्ट उतने अच्छे हैं। आप उनको पाटा विकेट पे खिला दो, स्पिनर को मार मार के बुरा हाल कर देंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ पे वो नहीं चलेगा टर्निंग ट्रैक्स में। अगर आप उनको फ्लैट ट्रैक दोगे तो इंग्लैंड भी आपका मार मार के भड़ता बना देगी, जिस तरह से वो खेलते हैं। सिक्स, अगर इंडियन इंग्लैंड को आप बैटिंग ट्रैक दोगे, पहले बैटिंग करेगी वो 600 700 एक दिन में खड़ा कर देंगे, ये सच्चाई है। तो वो तो आप दे नहीं सकते उनको, आपको पता है। तो इफ यू आर गोइंग टू प्ले ऑन स्पिनिंग ट्रैक्स, यू नीड टू रीलुक एट योर टीम सिलेक्शन। बैटिंग में भी, जो भी हमने बॉलिंग में बताया वो तो है ही। आई एम नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट अबाउट शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर, एंड व्हेन आई से दैट, उनकी टेक्निक मुझे उनकी टेक्निक इतनी स्ट्रांग नहीं लगती। तो वो विंडिकेट भी हो रहा है वो पॉइंट काफी हद तक। तो यू नीड टू बी ब्रेव। आपको दोबारा देखना पड़ेगा। अगर आपको इतने ही एडमेंट हो, आपने पुजारा को बिठा दिया, आपने रहाणे को बिठा दिया, तो भाई उनके आगे उनके कोई रिप्लेसमेंट भी तो होते उतने अच्छे। आपको True, वो भी तो true. देखना पड़ेगा। आप वही उन्हीं को खिलाए जा रहे हो, फिर फेल हो जाते हैं, फिर खिला लेते हो। दैट इज नॉट द वे इट वर्क्स। तो यू नीड टू रीलुक, तो इंडिया को करना पड़ेगा। व्हाट डू यू से संदीप? No, I agree with you. See, it's going to be pretty tough for Shreyas Iyer to continue in the squad once Virat Kohli is back, without a doubt. And Shubman Gill perhaps might get this series because there's no immediate replacement for him at number three unless we go back to Pujara. That looks like a distant dream right now. But I don't think Shreyas Iyer will be a part of the team going forward at number four because Virat Kohli should be back. See, imagine if I were Virat Kohli, I think I would be rushing to Vizag taking my next flight, okay, unless I have any emergency personally, because with due respect to him, I respect his break, but you should be there for the country being a prime player at number four, which is a very crucial position. So I wish he's back for the second test itself because India is in trouble and we should have a full-fledged batting lineup and full-fledged squad or 11 to tackle a side like England who can play aggressive brand of cricket under any conditions. So to me, I think our approach needs to change in our in the second test. We got to be mentally strong. Even Yashasvi, I just want to point out that Yashasvi Jaiswal, who batted really well in the first innings, he bogged down during the second innings for no reason. Yashasvi Jaiswal could have played attacking cricket. The moment he saw two fielders in the D in the second innings, he was under pressure. He was under severe pressure. Of course, he would learn as he plays more cricket, but I think Yashasvi Jaiswal could have been a bit more confident. He could have been a bit more aggressive. That could have perhaps changed the result of the game because we lost just by 28 runs. So it was not a 100 plus run defeat or a 75 or a 150 plus run defeat. It was just a 28 run defeat. So the margin of error or the application in terms of positivity and attitude, the difference was pretty minimal between the sides. So I think India needs to be a bit more brave, and we got to take a few unconventional selections to make sure that we come back on the winning track. Final comment, Sachin, from your end. True, true, true. Absolutely. India needs to get the team selection right. One. And second, they need to avoid this trap of thinking too much about Bazball. So I think that is the best bet. Although I'm still skeptical about India's chances in this series now, more than before. So I hope India makes a comeback, but it seems difficult as of now. Hope for the best. Hope India gets their selection right, and hope Virat Kohli is back in the 11 very, very soon. And we are going to witness an exciting test series between two high quality test playing nations. Thank you very much. See you all very soon. See you.